अच्छा, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल 11.4 किया था. ठीक है, so let's move on from there. And today we will start by discussing multiple gauge bridge configuration. Multiple gauge bridge configuration. ठीक है. If you remember, in one of the previous lecture, we discussed that if in a Wheatstone bridge, if you have a single variable resistance, then we call it, or in terms of strain gauges, if you have a single strain gauge in a Wheatstone bridge, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, we call that a quarter bridge. If a Wheatstone bridge have two gauges in it, means two gauges or two resistances whose values are changing or that we want to measure, and the other two resistances are fixed value, then this type of a Wheatstone bridge we'll call a half bridge. And lastly, if a Wheatstone bridge have four gauges, then this type of a Wheatstone bridge we'll call a full bridge. ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, if you look at this diagram, ठीक है, so see in this diagram, the position 1 and position 2 have gauges. Position 1 and position 2 on the Wheatstone bridge have gauges. Now this type of and the other two resistances are just normal resistances in the Wheatstone bridge. Now this type of a Wheatstone bridge will be called a half bridge, because out of the four total resistances in the Wheatstone bridge, two of them are gauges. Okay, two of them are a resistance that will change, or two of them are a resistance whose values we want to measure, or whose change we want to figure out. Okay? If you have only one gauge and this one is just a fixed resistance, then this type of a bridge would be known as a quarter bridge. If all of the four resistances are actually some gauges or some sensors, then this type of a Wheatstone bridge will be known as a full bridge. Clear, students? यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है. So now, up till now we discussed, or we only discussed quarter bridge. That means that out of the four resistances on the Wheatstone bridge, only one of the resistance is a gauge, is a strain gauge. But so our formula was very simple. We had that E naught delta E naught divided by EI is equal to क्या फार्मूला था लास्ट टाइम हमने जो डिराइव किया था? So delta R by R. हाँ, that's either this or this. ठीक है? So we have this formula for a quarter bridge circuit. But what is the formula for a full bridge circuit or a half bridge circuit? ठीक है? That is derived on this slide. ठीक है? On this slide, we derive that equation. ठीक है? So we start with the basic bridge equation. Then we do partial derivative of the output of the bridge with respect to R1, R2, R3, R4. ठीक है? Partial derivative हम कर लेते हैं. So total derivative हम निकाल लेते हैं. Since in this bridge circuit, like in the previous case, only R1 was changing. R1 was changing from R1 to R1 prime, such that R1 prime was equal to R1 plus delta R1. Now in this case, we are basically dealing, in this case, we assume that it's a full bridge and all the resistance value changes. So R1 changes from R1 to R1 prime, R2 changes from R2 to R2 prime, okay, such that R2 is equal to R2 prime is equal to R2 plus delta R2.
Okay, and so on. Similarly, R3 changes to R3 prime, and R4 changes to R4 prime. Okay. For that, we take total derivative or partial derivative of output of the bridge, since now output of the bridge is not only a function of change of resistance in R1, but it's also a function of change of resistance in R2 and change of resistance in R3 and change of resistance in R4. Therefore, we will take total derivative or a partial derivative with respect to R1, R2, R3. When you do that, you get this equation. Now we rearrange the terms and replace delta R1 or R2, delta R1 or R1 with just like here. Okay. So we replace delta R1 or R with gauge factor, since we know that gauge factor is equal to delta R over R. In for a single bridge, it was delta R1 or R1 over Strength, sir. G over strain. Yes, delta L over L. Okay. So similarly, what we do in here, we replace all. So delta R1 over R over strain 1 will be, since we know that this is gauge factor 1, similarly gauge factor 2 will be equal to delta R2 over R2 over strain 2, and so on. So if you replace all the delta, so in this particular case, delta R1 over R1 will be equal to gauge factor 1 into strain 1. Okay, just excuse me, just give me 1 minute for some. Just give me one. Channel. So where we were. ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Can you hear me? Yes, sir. ठीक है. So we replace delta R1 or R1 with gauge factor 1 into strain 1. Similarly, delta R2 or R2 with strain 2 into gauge factor 2. Similarly, delta R3 or R3 with strain 4 into gauge factor 4. And similar, so delta R3 or R3 would be replaced by strain 3 into gauge factor 3, and delta R4 or R4 will be replaced by strain 4 into gauge factor 4. Okay? So again, from there, what we do an assumption
uh, we do an assumption, and the assumption is that the initial resistances, these R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4, that means that the initial resistance, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि R1 changes to R1 prime. So R1 is our initial resistance, and R1 prime is the final value of the resistance when, of course, the strain gauge experience certain strain. So we assume that the initial resistances are all equal. ठीक है, are equal का मतलब क्या है कि let's suppose we have a strain gauge, we have identical strain gauges. ठीक है, or we have strain gauges of the same initial resistance value or same value. So for example, all the strain gauges are 350 ohm strain gauges. So initially when there was no load applied on the specimen and the strain gauges were not experiencing any strain, their initial resistance was 350 ohm for the strain gauge at location at R1, strain gauge at location at R2, strain gauge at location at R3, strain gauge location at R4. ठीक है? Now, if we assume that, that simplifies our equation. ठीक है? That simplifies our equation because now R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R. Okay? So that simplifies our equation. From there, we can do one more assumption. So rather than saying that all the strain gauges have same initial resistance, we say that all the strain gauges are identical. ठीक है, strain gauge 1, strain gauge 2, strain gauge 3, strain gauge 4 are of the same model. ठीक है, make and model, same type of strain gauge. That means that their initial resistance is same and their gauge factor, ठीक है, their gauge factor or the slope of their calibration curve is identical. If we assume that, then that means that not only R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R, but gauge factor 1 is equal to gauge factor 2 is equal to gauge factor 2, 3 is equal to gauge factor 4 is equal to gauge factor. If we do that, we get this generic formula, okay, for a bridge circuit. So the previous formula that we derived last time was for so our previous formula was delta E naught divided by EI is equal to gauge factor by 4 into strain. Okay? That was for a quarter bridge, when in the Wheatstone bridge, only one of the resistance is replaced by strain gauge. Okay? Now this formula, this is the generic formula. Okay? This is the full formula. Now we can get this formula from the full bridge formula. वो कैसे? If we have fixed resistance at in place of R2, that means there is no resistance, though no gauge at R2 position, no gauge at R4 position, no gauge at R3 position. That means when the specimen will experience certain strain, since there is no gauge in the position 2, 3, and 4 of the Wheatstone bridge, therefore no strain will be experienced by those resistances, or those resistance value will not change, and therefore strain will be 0 and at those points. If that is the case, then we get a quarter bridge equation from the full bridge equation. Clear यहाँ तक students? Any question? सर मतलब कि एक ही वो रेजिस्टेंस तीनों फिक्स और एक चेंज हो रही है सर यहाँ पे.
तीनों फिक्स हैं, 3 रेजिस्टेंस फिक्स हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जबकि एक रेजिस्टेंस R1 की जगह जो है वहाँ पर फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि स्ट्रेन गेज है। तो वो स्ट्रेन गेज कुछ स्ट्रेन सेंस करेगी। उस स्ट्रेन की वैल्यू जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे, चूंकि बाकी रेजिस्टेंस तो कोई स्ट्रेन सेंस नहीं कर रहे, सो उन स्ट्रेन्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेन की वैल्यू रह जाएगी। तो ये दिस इक्वेशन विल बिकम द क्वार्टर ब्रिज इक्वेशन। सही है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, अब हम जो थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम एक प्रॉब्लम, बल्कि एक और कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में, ब्रिज कांस्टेंट। ठीक है, सो ब्रिज कांस्टेंट जैसे जस्ट लाइक वी हैव ओके, सो व्हाट इज अ ब्रिज कांस्टेंट? ठीक है, ब्रिज कांस्टेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी राइट एन इक्वेशन। ठीक है, सो k or bridge constant k is equal to gauge factor divided by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3 divided by gauge factor by 4. अच्छा, अच्छा नहीं, इस बात से आपको कुछ, इससे आपको कुछ अंदाजा हो रहा है? इस इक्वेशन को देख के आप मुझे कुछ बता, कोई मुझे बता सके व्हाट इज व्हाट इज, सॉरी, नॉट गेज फैक्टर, व्हाट इज ब्रिज कांस्टेंट? ठीक है, व्हाट इज ब्रिज कांस्टेंट के, स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, कोई भी अगर नहीं है तो क्वेश्चन पूछ लें। एनीवन? सर जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसकी समझ नहीं आ रही, गेज फैक्टर डिवाइड इसको। अच्छा, चले मैं यूं लिख देता हूँ आपके लिए, 2 फार्मूले में लिख लेता हूँ। डेल्टा ई नॉट, चले मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, k is equal to delta E naught divided by EI actual bridge divided by delta E naught or EI quarter bridge. अब अब मुझे बता दें, अब कुछ हिंट आपको मिले व्हाट इज ब्रिज कांस्टेंट, स्टूडेंट? हाँ सर जी, अगर हमारे पास एक ऐसा मतलब ब्रिज गेज हो जिसमें मतलब हमारे पास जो है ना दो या दो से ज्यादा मतलब वो रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हों, और हमारे पास एक क्वार्टर ब्रिज है ना, तो जो मल्टीपल ब्रिज का जो वो आ रहा है डेल ई नॉट डिवाइड बाई ई आई, और जो वो क्वार्टर ब्रिज की जो रेशो है ना उसको हम गेज कांस्टेंट ब्रिज कांस्टेंट कहते हैं। ब्रिज कांस्टेंट, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने, तकरीबन तकरीबन आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, सो व्हाट इज ब्रिज कांस्टेंट? ब्रिज कांस्टेंट देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर हम ब्रिज में मल्टीपल गेजेस क्यों लगाते हैं? ठीक है, एक गेज लगा के हमारी कैलकुलेशन सिंपल है, फार्मूला सिंपल है। व्हाई डू वी install multiple gauges in, so why do we have, चूंकि क्वार्टर ब्रिज से हमारा काम चल सकता है, why do we have a half bridge और a full bridge? क्या जरूरत है? That should be your first question. ठीक है, the answer to that is number one, if you have multiple strange gauge bridge configuration, that means if you have a half bridge configuration or a full bridge configuration as compared to a quarter bridge, you can do certain things. Number one, you can, for the same input strain, you can increase the output of the bridge.
Okay, you can basically you can increase the sensitivity of your strain measurement equipment. ठीक है? For example, अगर एक for example ठीक है? For example, ये एक बार है, उस पे मैं टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? और ये इक्वेशन हम अपने पास लिख लेंगे, डेल्टा ई नॉट डिवाइड बाय EI is equal to gauge factor divided by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3. ठीक है? Now let's suppose I put strain 1 gauge here. So this is giving me strain 1, and I put strain 4 gauge here. And the other two, strain 2 and strain 3, are fixed resistances. Means it's a half bridge. That it's a half bridge configuration that the Wheatstone bridge has 2 strain gauges, and the other 2 location of the Wheatstone bridge have fixed resistances. Now, if you see in the equation, for the same load applied, let's first do it with a single bridge. If we do it for a single bridge, then even E4 is also 0, because E4, the location 4 of the Wheatstone bridge, doesn't have a strain gauge. It has a fixed resistance, so it's not sensing any strain at the location 4. So let's suppose strain for this let's suppose this is 10 kilonewton force. For this force, let's suppose we experience strain 1 equal to 5 microstrain, so 0.000005. So this is the strain value that we are experiencing for this much load on that particular specimen. So if let's suppose the gauge factor value is 2, okay, and the strain value is 0.000005, okay, and let's suppose input value is 15 volt. So I can calculate delta E naught value from this. So this will be 2 multiply 0.000005 multiply 15. ठीक है? और मेरे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी. That will be the output of the Wheatstone bridge, output voltage of the Wheatstone bridge. ठीक है? Now let's say rather than using a quarter bridge, I decide to use a half bridge. So I put the second gauge here, and this is strain 4. So out of the 4 resistance locations on the Wheatstone bridge, location 1 has a strain gauge, location 4 has a strain gauge, and location 2 and 3 are fixed resistances. Since out of the 4, 2 locations have gauges and 2 locations have fixed resistance, so this type of a bridge will be called a half bridge. And now let's do our calculation. So in this case, since it's a tensile load and the top surface and the bottom surface is an axial tensile load, so the top surface and the bottom surface will experience the same amount of strain. And now we have 2 strains. Strain 1 is 0.0005 strain, or strain 1 is 5 microstrain, and strain 4 is also 5 microstrain. Okay? Now, if you add them to, so what will happen, since both the signs are positive, they will add together, and this will result as twice delta E naught compared to a quarter bridge. Okay? Now you will get, for the same amount of strain detected, the bridge output voltage is twice, for the half bridge, is twice as much as a quarter bridge. Is it clear, students? Yes, sir. ठीक है?
So you see the first advantage of why we use multiple gauge V-stone bridge. Why do we use a half bridge or a full bridge? Ye clear, we can improve the sensitivity of our strain measurement. So sensitivity means for the same input, for the same input of strain, our V-stone bridge output is twice as much in this particular example. Is it clear, students? एक्सक्यूज मी सर जी जी सर यहाँ पे सर ये जो हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें तो सर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा इक्वली सर होगा जो कि इक्वली स्ट्रेन दोनों में हम इज्यूम करते हैं कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, आपका सॉलिड क्रॉस सेक्शन एरिया, और आप जो है लोड जो है वो एक्सियल अप्लाई करें, तो टॉप और बॉटम सरफेस पे सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन होगी, एग्जैक्टली सेम स्ट्रेन होगी। और सर वो भी तो हम एज्यूम करेंगे ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और मटेरियल जिससे वो बने तो सभी एक सेम होगा। नहीं, वो आप क्यों एज्यूम करेंगे? जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता होगा ना कि ये किस चीज से बना है। अगर वो मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं है या क्रॉस सेक्शन एरिया में फर्क है, देन यू विल टेक दैट इनटू अकाउंट, आप उसको इनटू अकाउंट लेंगे। ये जो मैं आपको सामने एक एग्जांपल कर रहा हूँ कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ले लें, और उस बीम के ऊपर जो है आप एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस आपके टॉप और बॉटम में जो है स्ट्रेन्स जो होंगी वो सेम होगी। टॉप सरफेस आप लोगों ने बीम्स पढ़ी होंगी, ठीक है। जो सरफेस होगी उसमें कोई, टॉप और बॉटम सरफेस में स्ट्रेन सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। सही है सर, थैंक यू, क्लियर है। हाँ, अगर 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 आपकी सिनारियो ऐसी है कि जिसमें टॉप और बॉटम स्ट्रेन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो सेम नहीं है, तो देन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन। इस अंदाज से आप अप्लाई नहीं कर सकते। देन यू विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि मेरे पास जो है स्ट्रेन्स सेम नहीं है, so my sensitivity or my bridge constant will not be 2, मतलब my sensitivity will not increase by 2, it may increase by some other value, ठीक है, and we will see that. Let's suppose rather than using E4 I use E2, strain 2 location, ठीक है। Let's suppose I use strain 2 location, and so these two are fixed resistances जो मैंने 0 0 नोट कर दी। Now if I apply axial load, strain 1 is 5 microstrain and strain 2 is 5 microstrain, ठीक है, but in the equation strain 2 value has negative sign and strain 1 value has positive sign. If you solve this equation, what will happen, students? जीरो आएगा सर। Zero आएगा. So Yes, even though you are applying, even though the strain gauges are experiencing strain equal to 5 microstrain, but since both the strains have identical value but opposites, both the strains have identical value, but in the equation, this strain 1 and strain 2 has opposite signs. So in the equation, they will cancel out each other and your bridge output will be equal to 0. Okay? Now do something else. Let's do apply bending. Now what would happen? Chale, let's apply bending in this direction. Now what would happen? Students? सर जो अपर सरफेस होगा वो टेंसाइल होगा और जो लोअर सरफेस है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। बिल्कुल सही। तो एक हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन आएगा और एक हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव 5 माइक्रो स्ट्रेन आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर स्ट्रेन 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 5 माइक्रो स्ट्रेन। नेगेटिव और नेगेटिव
जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा इससे आपके पास? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव बनेगा। और फिर आपके पास ब्रिज कांस्टेंट क्या होगा? के की वैल्यू क्या आएगी? ट्वाइस एज मच आ जाएगी ना। समझा रही इस बात की? जी सर। ठीक है, अब जरा इस बात को सोचें। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं बेंडिंग करूंगा, इफ आई डू बेंडिंग, देन के वैल्यू विल बी इक्वल टू 2, ब्रिज कांस्टेंट वैल्यू विल बी 2 इफ इट इज बेंडिंग स्ट्रेन। लेकिन अगर बेंडिंग के बजाय मैं एक्सियल लोड अप्लाई करूं और एक्सियल स्ट्रेन प्रोड्यूस करूं टॉप सरफेस, यानी एक्सियल स्ट्रेन प्रोड्यूस करूं स्पेसिमन में, फिर के की वैल्यू क्या होगी? समझा रही इस बात की? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि we can design our system, strain gauge measurement system, in such a way that the strain gauges will not measure one type of loading, strain produced by one type of loading, and they will measure strain produced by another type of loading. So अगर मैं देखें, if I place strain 1 and strain 2 on the top and bottom surface of the beam, ठीक है, and if I apply axial load, then the bridge will not output any value. But if for the same configuration, if I apply bending loading, ठीक है, now the strain gauge will detect the strain, not only detect the strain or produced by the bending loading, but the bridge will also have some output as well. Okay? But if the axial load is applied for this configuration, the strain gauges will detect strain, but the bridge output will be equal to 0. Okay? On the other hand, if I replace strain 2 with strain 3, with strain 4, now this configuration of the bridge circuit will detect axial loading, strain produced by axial loading, but will completely ignore strain produced by bending loading. Is it clear, students? यस सर। ठीक है, अब इस आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज मल्टीपल गेज कॉन्फ़िगरेशन व्हेन we can use a quarter bridge configuration and get our result? Why do we use a multiple gauge bridge configuration? Why do we use a half bridge or a full bridge? उसका आंसर मुझे दे दें कोई स्टूडेंट। सर सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए सर हम यूज करते हैं सर। हमारी स्ट्रेन मेजरमेंट की जो सेंसिटिविटी है बिल्कुल सही है, दैट्स वन रीजन। सेकंड रीजन, सर हमको पता चले कि इस पे जो लोड मतलब अप्लाई हो रहा है वो टेंसाइल है या बेंडिंग है, इससे भी अंदाजा हो सकता है अगर स्ट्रेन गेज की जो आउटपुट है वो जीरो है या मतलब कोई वैल्यू दे रहा है सर। दैट इज ट्रू, लेकिन हम इसको दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं। वी कैन से दैट वी कैन डिजाइन आवर सिस्टम सच दैट इट इज ओनली सेंसिटिव टू ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है, कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोडिंग के लिए सेंसिटिव हो और दूसरी टाइप ऑफ लोडिंग को इग्नोर कर ले। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हम स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 4 लोकेशन पे स्ट्रेन गेजेस लगाएं, तो फिर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सियल लोडिंग के लिए सेंसिटिव होगी। इस ये डायग्राम को देख के हम डिस्कशन करें, और बेंडिंग लोडिंग के लिए वो कंप्लीटली insensitive होगी, means its output will be, it will completely ignore bending loading. On the other hand, अगर मैं स्ट्रेन 4 की जगह स्ट्रेन 2 यानी स्ट्रेन गेज जो है मैं लोकेशन 4 ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगाने के बजाय लोकेशन 2 ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगा लूं, in this case my system will ignore axial loading but will measure the bending loading, strain produced by the bending loading. Is it clear, students? Students? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है?
सर लोकेशन के बारे में कंफ्यूजन है सर कि हम कैसे लोकेट करें कि मतलब ये पॉइंट जो है 2 है या 4 है या 3 है। नहीं, वो तो बहुत आसान है, आप व्हीटस्टोन ब्रिज पे आ जाए, ठीक है। देखिए आपकी स्टैंडर्ड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये आपकी स्टैंडर्ड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आप देखें, पावर से स्टार्ट लें, जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड से ले ली, पॉजिटिव साइड से, और ये जो है नेगेटिव साइड है, ठीक है। नाउ पॉजिटिव साइड से इस साइड पे, एंड इट डजंट मैटर, जो पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है इसको हम R1 कह सकते हैं, और इसको हम टिपिकली R3 कहते हैं, ठीक है। अब इसे मैंने R2 कह दिया और इसे मैंने R4 कह दिया। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन माय फार्मूला इज, जो कि डिराइव हुआ है, ठीक है, वो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिराइव हुआ है, दैट इज E naught over EI is equal to gauge factor by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था वो अपना माइक ऑन रखें और दरमियान में मुझे बताएं जहां पे कंफ्यूजन। ठीक है, ये फार्मूला इस ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिराइव किया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख देता हूं, यहां पे मैं R3 और R4 लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं R1 और R2 लिख देता हूं। क्या इस फार्मूले में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि R1 और R2 शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द पावर सप्लाई, एंड R1 and R3 should be connected to the positive side of the power supply, and R2 and R4 should be connected to the R3 and R4 should be connected to the negative side of the power supply, ठीक है। On the other hand, अगर तो ठीक है, अगर तो चेंज हो जाते हैं लोकेशन, फॉर एग्जांपल चलें हम, दिस इज इस लोकेशन, फॉर एग्जांपल इट बिकम्स R3, दिस बिकम्स R1, this becomes R4, this becomes R2. तो उसी अकॉर्डिंगली यू चेंज दिस इक्वेशन, यू चेंज दिस इक्वेशन। एक तरीका तो ये है कि यू डिराइव दिस होल इक्वेशन, वही जो हमने बिल्कुल शुरू में व्हीटस्टोन ब्रिज का फार्मूला डिराइव किया था यूजिंग KVL KCL अप्लाई करके, या जो है हमने बेसिक इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस के फार्मूले अप्लाई करके जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, उससे आप दोबारा डिराइव कर लें। दैट्स वन वे, एंड दैट इज more precise way. The other way is you just replace it. So R1, this becomes R3, R2 becomes R1, R3 becomes R4, ठीक है, और R4 becomes R2, ठीक है, you just replace it. तो थोड़ा सा ओके, अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सर हम कैसे, किस रेजिस्टेंस को, किस पोजीशन, हमें कैसे पता होगा कि ये स्ट्रेन 1 व्हीटस्टोन ब्रिज की कौन सी लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम में लोकेशन चेंज कर देता हूं, जैसे अभी मैंने किया कि मैंने R1 के बजाय मैंने यहाँ पे R3 लिख दिया और R2 के बजाय R1 लिख दिया, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर, थोड़ा सा आपने याद रखना है, ठीक है, कि this your original formula corresponds to this bridge circuit, इस bridge circuit को correspond कर रहा, and that is strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3. This corresponds to this circuit, ठीक है। अगर इस सर्किट को की नंबरिंग आप चेंज करते हैं तो आपके इस फार्मूले की फॉर्म यही होगी, लेकिन ये नंबरिंग यहां पर भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आसान प्रॉपर तरीका क्या है कि आप दोबारा स्टार्ट से डिराइव करें, लेकिन डिराइव करने की जरूरत नहीं है अनलेस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, आप क्लियर ना हो तो आप डिराइव कर सकते हैं।
अदरवाइज अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद है, इसके लिए ये फार्मूला कॉरस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली आप अपने फार्मूले को अपडेट कर लें। डज इट, आपके क्वेश्चन का जवाब मिला है आपको स्टूडेंट्स? जी सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, आप माइक बेशक म्यूट कर लें। किसी और को कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? सर अर्थ का हमारे पास स्ट्रेन गेज 1 है फार्मूले में, अगर है इसी R1 की जगह वो R4 नंबर पे आ जाए, 4 उसका मतलब रेजिस्टेंस 4 R1 की जगह आ जाए, तो सिर्फ उसमें 1 की जगह 4 लिखना है सर? 4 लिखना है, बिल्कुल। ओके सही। ठीक है, मतलब मैंने अभी आपको कहा कि ये जो सारी हम सारी डिराइवेशन कर रहे हैं ना, वो इस डायग्राम के लिए कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर रेजिस्टेंस की लोकेशन, ये नंबरिंग चेंज होगी तो आपके फार्मूले में भी चेंज आएंगे। अब प्रॉपर तरीके तो ये है कि आप दोबारा स्टार्ट से दोबारा डिराइव करें और आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा अगर आपकी डायग्राम की नंबरिंग, रेजिस्टेंस नंबरिंग डिफरेंट है। लेकिन इतने लेंथी प्रोसेस से गुजरने के बजाय अगर आपको ये डायग्राम याद हो और इसका कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला याद हो, तो अगर कोई नया डायग्राम जिसमें रेजिस्टेंस वैल्यूज, रेजिस्टेंस नंबरिंग चेंज हो गई है, तो आप फार्मूले को उसी हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। दैट्स इजियर वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, ओके। अच्छा अब हम एक एग्जांपल यही अच्छा, दो चीजें अभी हमने डिस्कस की कि ब्रिज कांस्टेंट, हाँ बल्कि क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू वी यूज मल्टीपल गेज ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन। दो बातें अभी आपने मुझे बताई, एक टू इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन मेजरमेंट सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, सिर्फ स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी इंप्रूव नहीं कर रहे, या जो स्ट्रेन गेजेस जो वी स्टोन ब्रिज के अंदर लगे हुए हैं, तो इस पूरे सिस्टम की कॉम्बिनेशन कि जो है हम सेंसिटिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि वी कैन बेसिकली निग्लेक्ट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है, एक फील्ड में हो सकता है आपको जरूर, फॉर एग्जांपल आपको somebody, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है एक एंगल पे लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे सम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि भाई आप इसकी सिर्फ जो है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैलकुलेट करके दें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी इस फोर्स को अगर आप दो हिस्सों में रिजॉल्व कर लेते हैं, एफ वाई एंड एफ एक्स, और आपसे कहा जाता है कि सिर्फ एक्स एफ वाई कैलकुलेट करें रादर देन एफ एक्स, यानी इग्नोर एफ एक्स, तो फिर आप क्या करेंगे? वी नो दैट एफ एक्स विल प्रोड्यूस एक्सियल स्ट्रेन while एफ वाई विल प्रोड्यूस हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेन आएगी, यानी टॉप सरफेस पे स्ट्रेन जो होगी, एफ वाई विल प्रोड्यूस बेंडिंग इन द स्पेसिमेन, ठीक है, और बेंडिंग लोड प्रोड्यूस करेगी, जबकि एफ एक्स विल प्रोड्यूस एक्सियल लोड। लेट सपोज फॉर सिंप्लिसिटी सेक, ताकि आपके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन arise now, let's suppose I apply this force right here at the axial location, at the axis location. Let's suppose I apply this force here. Now this force can be resolved. We know that this force can be resolved into two components, fx and fy. ठीक है, और लेट्स सपोज आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है या रियल लाइफ में आपके पास क्वेश्चन ये है कि you need to find out the fy value. ठीक है, you are not concerned with fx. ठीक है, some force f is applied at certain angle, we don't know about the angle, but it is some angle other than zero, so this force is applied at some angle theta, and you are required to find only the y component of this force. You are not interested in x component of this force. So for this particular case, what type of strain gauge configuration should you use? We should use a strain gauge configuration, strain gauge
bridge configuration that will ignore fx component, which produces axial loading. So we will use the bridge configuration that ignore axial strain, and that is sensitive only to bending strain. For our equation, from our equation, we know that delta E naught divided by EI is equal to gauge factor by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3. So this is our configuration. Now, if we want, we know that this strain will be positive for this particular configuration of the force, applied force, and this strain will be negative if we are for this Fy. Okay? Now, if I use strain 1 location and strain 2 location, or resistance 1 location of the bridge and resistance 2 location of the bridge, if I use these two locations, then what would happen? That the axial strain produced by Fx, will have the same value, but because of the negative sign here, will be cancelled out from the bridge output. Means axial component of the force will, of course, produce axial strains, but because of the strain gauge configuration in the bridge circuit, the effect of axial strain will cancel out each other. Okay? Sensed by strain 1 and strain 2. On the other hand, the bending strain due to Fy will be on the top surface. It will be, so strain 1 will have positive value and strain 2 will have a negative value. But since the equation also has a negative sign, so the negative strain of strain 2 will become positive, and you will have twice as much output for bending strain as you will get for a single strain gauge. Is it clear, students? Yes sir. सर अगर 2 की जगह हम स्ट्रेन गेज 3 लगाए तो फिर भी सही यही केस होगा सर? अगर 2 की जगह कितने लगाएं? मतलब कि अगर स्ट्रेन गेज 3 को उस पोजीशन पे लगाए, रेजिस्टेंस 3। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेन गेज 3 लगाने फिर भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन। ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किए 2 एडवांटेजेस फॉर 2 रीजन व्हाई वी यूज मल्टीपल स्ट्रेन गेज bridge configuration. One is improve sensitivity of the strain measurement. 2, to ignore certain types of strains. Okay? Now there is third factor as well why we use multiple strain gauge bridge configuration, and that is temperature compensation. So what do I mean by temperature compensation? Okay? So for example, I have this specimen. Okay? And I put a strain gauge on this quarter bridge. Okay? So it's a quarter bridge. That means that the bridge circuit has only one strain gauge and 3 fixed resistances. And that one strain gauge is placed on the top surface of this rectangular cross-section area bar. Okay? उसके ऊपर लगा दें. Now let's assume that it is fixed on this end. Okay? This is fixed on this end. And let's say there's no force acting on this bar. But there is a temperature change from T1 to T2. From T1 to T2. Okay? Now, if there is a temperature change, okay, if there is a temperature change, this
this material will expand because of temperature. Clear है students? होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा. Now, if it expands because of temperature, now what would happen to the if the material expands? That means there is change in length per unit length. That means that the strain gauge will experience certain strain. ठीक है? It will experience certain strain, and your V-stone bridge output will have certain voltage output value. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. लेकिन is this strain caused by certain loading? क्या ये किसी लोड की वजह से ये strain produce हुआ है? No, sir. Due to No, temperature. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस apparatus को यूज कर रहा हूं लोड फोर्स F मेजर करने के लिए. ठीक है. अब मेरा V-stone ब्रिज तो मुझे कुछ आउटपुट वोल्टेज दे देगा ना. अब मुझे तो ये पता अंदाजा नहीं हो रहा कि ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आया या अप्लाइड फोर्स की वजह से आया. तो मैं एक गलत वैल्यू ले लूंगा. आई विल कैलकुलेट सम F वैल्यू. ठीक है. मैं कुछ F फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जबकि रियलिटी में कोई फोर्स तो अप्लाई नहीं हुआ था. सिर्फ वी गॉट द स्ट्रेन, वी गॉट थर्मल स्ट्रेन. ठीक है. मतलब वी गॉट द स्ट्रेन वैल्यू फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन दैट रिजल्टेड इन ब्रिज आउटपुट. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल ये कॉन्फ़िगरेशन मैं एक वेट बैलेंस के लिए यूज कर रहा हूं. वेट बैलेंस के लिए. ठीक है. कि जैसे आप लोग यूज करते हैं कि उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, वो आपको वजन बताता है कि आपके बॉडी वेट कितना है, 50 kg, 80 kg, 70 kg, सो ऑन. ठीक है. अब अगर ये वेट बैलेंस पड़े हुए कमरे में और कमरे का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे सीजनली चेंज होता है. अभी सर्दियां हैं, कमरे का टेम्परेचर 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड है. गर्मियों में हो सकता है कमरे का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो. ठीक है. सो अगर ये स्ट्रेन गेजेस डिजाइन किए गए हैं, यानी ये स्ट्रेन गेज अप्लाई किए गए थे सर्दी के मौसम में. ठीक है. व्हेन द टेम्परेचर वाज 10 डिग्री सी, और आप गर्मी के मौसम पे जब ये वेट बैलेंस वैसे ही पड़ा होगा, इसके ऊपर कोई बंदा खड़ा नहीं है. ठीक है. तो गर्मी के मौसम में बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यू विल सी सम apparent strain, you will see some value. वेट बैलेंस आपको बता रहा होगा कि भाई इस वक्त वेट बैलेंस पे 3 kg लोड पड़ा हुआ है, जबकि आप वेट बैलेंस को देखेंगे उस पे कोई बंदा खड़ा नहीं है, कोई चीज नहीं है, बट इट इज शोइंग यू सम लोड वैल्यू. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज द स्ट्रेन गेज measured strain because of the temperature, not because of temperature change, not because of the applied force. Is it clear, students? Yes, sir. अब आप मुझे बताएं, ये अभी तक जो हमने पढ़ा है फार्मूला, फुल ब्रिज का फार्मूला पढ़ा है, हम कैसे टेम्परेचर कंपेंसेट कर सकते हैं इस सिस्टम को? हम इस सिस्टम को कैसे टेम्परेचर प्रूफ आप कहें कि हम के बेशक चेंजेस आए उसमें क्या कहते हैं टेम्परेचर में, लेकिन V-stone ब्रिज के आउटपुट वोल्टेज पे फर्क नहीं आएगा, इवन इफ देयर इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट. स्टूडेंट, सर उनका केसिंग जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल. देखिए केसिंग जो है ना, अनलेस यू हैव ए परफेक्ट इंसुलेटर. ठीक है. इंसुलेशन जो है वो जो आपकी रेगुलर इंसुलेशन होती है, अनलेस यू हैव आर इनफाइनाइट आर वैल्यू, इट विल नेवर स्टॉप temperature change. It will only delay temperature change, means it will only reduce heat transfer. It never stops heat transfer unless you have a perfect insulator, या आपके पास perfect insulation हो. So insulation से डिले होगा, स्लो चेंज आएगा, लेकिन होगा जरूर. इंसुलेशन की तरफ ना जाए. हिंट जो है इस फार्मूले में, delta E naught divided by EI is equal to gauge factor by 4 into strain 1 minus strain 2 minus plus strain 4 minus strain 3. इस फार्मूले में हिंट.
सर हम अगर जो वेट स्टोन ब्रिज है ना जिस पे स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं वो इस तरह डिजाइन करें कि जो थर्मल स्ट्रेन आ रहे हैं ना वो हम जो है अदर स्ट्रेन से माइनस करें। हाँ, तो देखें, अगर अगर तो मैं यहां पर बॉटम में एक स्ट्रेन गेज लगा लूं, ठीक है, बॉटम में अगर मैं एक स्ट्रेन गेज लगा लूं और ये स्ट्रेन 1 हो जाए, यानी लोकेशन 1 पे इस स्ट्रेन गेज को मैं लोकेशन 1 पे कनेक्ट कर लूं, ठीक है, और बॉटम वाले को मैं लोकेशन 2 पे कनेक्ट कर लूं, ठीक है। अब बेंडिंग के लिए तो इट विल बी सेंसिटिव टू बेंडिंग। जब बेंडिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, आवर ब्रिज आउटपुट विल बी ट्वाइस एज मच एज द क्वार्टर ब्रिज। लेकिन जब थर्मल एक्सपेंशन होगी, व्हेन देयर इज नो फोर्स और थर्मल एक्सपेंशन होगी, तो थर्मल एक्सपेंशन तो एक्सियल एक्सपेंशन है ना, बेंडिंग एक्सपेंशन तो नहीं हो रही। इफ इट विल एक्सियली, हम एक्सियल स्ट्रेन जो स्ट्रेन 1 एक्सपीरियंस करेगा और स्ट्रेन 2 जो एक्सियल स्ट्रेन एक्सपीरियंस करेगा, चूंकि उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इक्वेशन में एक्सियल स्ट्रेन जो है पॉजिटिव, इक्वेशन में नेगेटिव है, तो क्या होगा कि जो थर्मल स्ट्रेन है वो खुद ब खुद कैंसल आउट हो जाएगा और जो बेंडिंग स्ट्रेन है वो मौजूद रहेगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जी सर। ठीक है। सो अब आपसे क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज योर टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन एक तरह से आपका, कि व्हाई डू वी यूज half bridge or a full bridge, or why do we use multiple strain gauge bridge configuration compared to a quarter bridge? आंसर के 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, टू इंप्रूव स्ट्रेन मेजरमेंट सिस्टम सेंसिटिविटी। नंबर 2, to cancel out or to ignore certain type of strains, ठीक है। Number 3, to do temperature compensation for strain measurement, ठीक है। ये 3 रीजन है why we use multiple strain gauge bridge configuration, ठीक है। अब एक ये वाला, जी सर अगर एक्सियल्स के लिए हम मतलब एक स्ट्रेन गेज वो डिजाइन कर रहे हैं सर, तो इसके लिए थर्मल कंपनसेशन हम किस तरह करें सर? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। उसकी थर्मल कंपनसेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अब एक्सियल के लिए अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्सियल लोडिंग के लिए ना, ठीक है, फोर्स, ठीक है, तो फिर तो मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज कर सकता, फिर तो मैं यूज करूंगा स्ट्रेन 1 एंड स्ट्रेन फोर्स 4 यूज करूंगा, ठीक है ना। देन आई विल यूज दिस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है बाय डिफॉल्ट जो है थर्मल कंपनसेशन नहीं कर रही, बट व्हाट आई कैन डू, ठीक है, what I can do, I can take the same material, exactly same material, ठीक है, I can take same material और उसके ऊपर कोई लोडिंग अप्लाई नहीं करता, बस मैंने रखा हुआ है और उसके टॉप और बॉटम पे मैं 2 स्ट्रेन गेजेस और सेम ब्रिज में कनेक्ट कर लेता हूं, R4, सॉरी R2, ठीक है, मुझे जरा नजर नहीं आ रहा। सो R4 तो यहां पे कनेक्टेड हो गया ना, दिस इज, सो R4 यहां पे कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और दिस विल कनेक्ट एट R2 एंड दिस विल कनेक्ट एट R3, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या होगा। देखें, if there is no loading present, if there is no loading present, ठीक है, F मौजूद नहीं है, and there is some temperature difference, some temperature variation, क्या होगा? अब ये दोनों मटेरियल जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक पड़े हुए हैं, so both the material experience the same temperature difference, and since both the material are identical, so what will happen? Both the material will experience same thermal expansion
both the material will experience same thermal expansion, and since these two strains will cancel out these two strains. Okay? Now, if load is applied, let's say both the load as well as temperature difference exist. In that case, this strain 1 and strain 4 will experience strain due to loading F and plus strain due to loading change in temperature, while strain 2 and strain 3 will only experience strain due to change in temperature. And since strain 1 and 4 minus strain 2 and strain 3. So strain 3 and strain 4 value get cancelled out, or they get subtracted from strain 1 and strain 4 value. Therefore, the strain produced due to delta T will be cancelled out, and only this system will only be sensitive due to strains due to axial loading. Is it clear, students? सर अगर दोबारा एक्सप्लेन करें सर ये कॉन्फ़िगरेशन सर. Acha. Sunny, that's why when I miss classroom teaching, ठीक है, इतना गन नहीं बनता, बोर्ड पे एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होता. Okay, so what I'm saying, देखें, let's say I have a cantilever beam. Let's say I have a cantilever beam. ठीक है, और उस कैंटिलीवर बीम पे एक एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है F. ठीक है, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दिस कैंटिलीवर बीम एक्सपीरियंस सम डेल्टा T. तो हमारे पास जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं इस कैंटिलीवर बीम में, वो दो तरह के स्ट्रेन है. स्ट्रेन एज ए फंक्शन ऑफ फोर्स एंड प्लस. So the total strain experienced by the strain gauges is a strain 1, which is a function of loading, and strain 2, which is a function of temperature difference. यहाँ तक clear है student? जी सर. Yes sir. ठीक है. अब मैं इसी एग्जैक्ट मटेरियल जिसका ये बीम जो बना हुआ है, जिस मटेरियल का कैंटिलीवर बीम, इसी का एक मैं छोटा सा सैंपल ले लेता हूं, और इसके ऊपर मैं दो स्ट्रेन गेजेस ओ लगा लेता हूं. ठीक है, ठीक है. लेकिन अब इसके ऊपर चूंकि ये सेम विसिनिटी में पड़ा हुआ है, नाउ दिस डजंट हैव, इसके ऊपर कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा, बट इट कैन एक्सपीरियंस द डेल्टा टी. सो दिस इज, इसे हम कह देते हैं 1 कह देते हैं. ठीक है. नाउ स्ट्रेन टोटल 2 इज ओनली अ फंक्शन ऑफ डेल्टा टी, स्ट्रेन टी. ठीक है, ये 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. सो लेट्स कॉल इट, चले एक्सियल कह देते हैं. ठीक है, और इसको मैं कह देता हूं स्ट्रेन टोटल बाय द बीम, और दिस इज स्ट्रेन टोटल बाय द डमी बीम, डीबी, डमी बीम. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. अब इस ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे रखता हूं कि दिस इज स्ट्रेन 1 एंड दिस वन इज स्ट्रेन 4. मींस स्ट्रेन 1 जो है यहां, ये वाली यहां पे कनेक्टेड है, और स्ट्रेन 4 जो है वो यहां पे कनेक्टेड. ठीक है, जबकि डमी बीम जो है, डमी बीम पे मैं स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 कनेक्ट करता हूं. स्ट्रेन 2 इज कनेक्टेड हियर, स्ट्रेन 3 इज कनेक्टेड हियर. ठीक है, इज इट क्लियर? जी सर. Yes sir. ठीक है. अब इस इक्वेशन में देखें, डेल्टा ई नॉट ओवर ई आई is equal to gauge factor by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4. या मैं इसको यूं भी लिख सकता, strain 1 plus strain 4 minus strain 2
माइनस स्ट्रेन 3। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि शुरू में कोई एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई नहीं हो रही, देयर इज नो एफ, सो एफ इज इक्वल टू 0, बट देयर इज सम डेल्टा टी। ठीक है, देयर इज सम डेल्टा टी एंड दैट डेल्टा टी इज एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द बीम्स। ठीक है, सिंस delta T is same, change in temperature is same, and the material of the beam is same, ठीक है? That means that even dimension of the beam, let's say, just to make it simple, dimension of the beam is same, let's say. That means that even though there will be some thermal expansion of the beam, and since the thermal expansion of the two beams, the actual beam, measurement beam and the dummy beam, since those thermal expansion will exactly be identical, so the thermal expansion measured by strain 1 and strain 4 will be exactly equal to strain 2 and strain 3. Therefore, the bridge output for those 4 strain gauges, 2 of which are connected on the measurement beam and the other 2 are connected on the dummy beam, the bridge output will be equal to 0, even though there is thermal expansion of the two beams. Is it clear, students? Yes, sir. ठीक है, now if I apply force now and there is also delta T present, let's suppose we apply force and there is also delta T present. Now in that case, the measurement beam will experience axial strain due to applied loading. It will also experience axial strain due to change in temperature, while the dummy beam will only experience axial strain due to change in temperature. But since the axial strain experienced by the experience, so these two are the axial strain experienced by the dummy beam, and these two are the axial strains experienced by the measurement beam. Now these strains have strain A of loading. These strains are strain A for loading F plus axial strain for delta T, while these strain measure only axial strain because of change in temperature with a negative sign, and this is the output. So this will cancel out this and you will only end up with axial strain due to applied loading. Is it clear now, students? Yes, sir, clear now. ठीक है, हमने टेम्परेचर कंपेंसेशन कर लिए फॉर एक्सियल लोडिंग. ठीक है, नाउ दिस स्ट्रेन measurement configuration will measure axial loading of the beam, but at the same time will ignore axial strain produced due to thermal expansion of the beam. Any question? Should I move forward? सर ये जो सेकंड डमी बीम हमने लिए सर, तो स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 में तो सर उसके साइन तो डिफरेंट है, तो सर ये किस तरह उसका वो एक्सियल स्ट्रेन वो हम जो है कैंसिल आउट करते नहीं, तो साइन स्ट्रेन 2 और स्ट्रेन 3 के साइन क्या है? सर दोनों नेगेटिव है सर. दोनों नेगेटिव है. ठीक है, तो आगे आप क्वेश्चन पूछे मुझे. हाँ सर हम तो अभी एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर हम डमी पे तो हम एक्सियल लोड नहीं अप्लाई कर रहे हैं. डमी पे तो कोई लोड अप्लाई नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन है. अच्छा सही है सर, ओके. वो तो सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन है ना. थर्मल एक्सपेंशन, दोनों बीम्स जो हैं टेम्परेचर डिफरेंस सेम एक्सपीरियंस करते हैं और लोडिंग सिर्फ जो है पहली वाली बीम पे अप्लाई हो रहा है. ओके सर, सही है, क्लियर. ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोडिंग वाली बीम में जो टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें थर्मल स्ट्रेन भी है और लोडिंग स्ट्रेन भी है, उसमें से हम डमी बीम की थर्मल स्ट्रेन माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो है लोडिंग बीम की लोडिंग स्ट्रेन की वैल्यू हम मेजर कर लेते हैं इस तरीके से.
ओके सर, सही क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा, शुड आई मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी बुक में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी देख लें, एग्जांपल्स भी हैं बुक के एंड में भी है, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। सो determine bridge constant for two strain gauges mounted on a structural member. As shown in figure 11.12, the member is subjected to uniaxial tension, which produces an axial strain, strain A, and a lateral strain, which is equal to minus Poisson ratio into strain A. Assume that all the resistances in figure 11.1 are initially equal, so the bridge is initially balanced, and let gauge factor 1 equal to gauge factor 2. ठीक है, हमें ये कहा गया कि भाई हमारे पास एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, और उसके ऊपर हम यूनिएक्सियल लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस सरफेस, इसकी जो टॉप सरफेस है उस पे मैंने दो स्ट्रेन गेजेस लगाए। स्ट्रेन गेज जो है उसके जो सेंसिटिव एक्सिस जो है, मेजरमेंट एक्सिस जो है, दैट इज अलाइंड विद द एक्सिस, लोडिंग एक्सिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर, और जो स्ट्रेन 2 जो है, ठीक है, सो स्ट्रेन गेज 1 measures axial strain, and strain gauge 2 measures lateral strain, ठीक है, and we know a relationship, हमारे पास सिंपल रिलेशनशिप क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप है कि भाई Poisson ratio is minus strain L divided by strain A, or we can say that strain L is equal to minus Poisson ratio into strain A. ये हमारे पास बेसिक रिलेशनशिप है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द ब्रिज कांस्टेंट, K की वैल्यू मालूम करें इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, व्हाट इज द K वैल्यू फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, और हमारे पास, मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, फार्मूला जो है दैट ब्रिज आउटपुट, जो आपका ब्रिज है, that output ठीक है, your bridge configuration divided by quarter bridge output, ठीक है, so this is quarter bridge. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, let's me erase, बस ये फार्मूला आप याद रखें, ठीक है, let me clear this up, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे जो ब्रिज का कोई भी मल्टीपल गेज फुल ब्रिज का फार्मूला क्या है हमारे पास, वी नो दैट डेल्टा E out EI is equal to gauge factor by 4 into strain 1 minus strain 2 plus strain 4 minus strain 3, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। नाउ सिंस स्ट्रेन गेज 3 और सिर्फ हमारे पास दो गेजेस, इट्स अ हाफ ब्रिज, ठीक है, तो स्ट्रेन गेज 3 और लोकेशन 3 और लोकेशन 4 पे तो स्ट्रेन गेज है ही नहीं, सो देयर विल बी जीरो स्ट्रेन एक्सपीरियंस बाय रेजिस्टेंस R3 एंड R4, क्योंकि वो तो स्ट्रेन को they cannot experience any strain or any resistance change due to strain, ठीक है, so हमारा फार्मूला जो है that will come out to be
that will be now equal to, यहाँ से, that will be now equal to gauge factor divided by 4 into strain 1 minus strain 2. ठीक है. Now strain 2 की वैल्यू, अब strain 1 जो है वो हमारा यहाँ पर एक्सियल है. ठीक है. स्ट्रेन गेज 1 जो है वो तो एक्सियल स्ट्रेन मेजर कर रहा है, और स्ट्रेन गेज 2 जो है वो लैटरल स्ट्रेन मेजर कर रहा है. सो डेल्टा ई आउट डिवाइडेड बाय ई आई is equal to gauge factor into strain A minus strain L divided by 4, which is equal to gauge factor by 4 into strain A minus का साइन वहां पे रह जाएगा, और ये जो होगा माइनस पॉइजन रेशियो इनटू स्ट्रेन ए. ये जो we know that. ठीक है. So that means that output of the bridge delta E out or EI will be equal to gauge factor by 4. अब EA में कॉमन ले लेता हूं. चलो मैं 2 स्टेप्स में कर लेता हूं. EA माइनस पॉजिटिव हो जाएगा पॉइजन रेशियो into EA, which is equal to gauge factor by 4 into axial strain into 1 plus Poisson ratio. ठीक है. ये हमारी जो ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है उसका आउटपुट ऑफ द ब्रिज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑफ द ब्रिज ये होगा. अब के को मैंने कैसे डिफाइन किया था? आपकी ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट डिवाइड बाय क्वार्टर ब्रिज का आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट. ठीक है. Quarter bridge will be equal to divide by quarter bridge का simple formula है GF4 gauge factor by 4 into strain. ठीक है. quarter bridge हम axial strain के लिए करते. So GF4 4 gauge factor और strain, sorry ये यहाँ पे कर लेंगे. ठीक है. That comes out, K comes out to be 1 plus Poisson ratio is your solution to the problem. Clear, student? Question? Students? No, so clear, sir. ठीक है. That concludes our lecture. ये बाकी 1-2 स्लाइड्स ये आप खुद पढ़ लें. ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वही जो मैंने आपको डमी बीम की बात की थी वो ये है. ठीक है. इसी तरह ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, टेम्परेचर कंपेंसेशन है, बेंडिंग कंपेंसेशन है, टेम्परेचर एंड बेंडिंग कंपेंसेशन एंड सो ऑन. ठीक है. ये असाइनमेंट अवैस साहब आपको असाइनमेंट्स और क्विज़ेस दे रहे हैं, सो दिस इज सम प्रीवियस सेशन के लिए, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू डूइंग दोज, derive those equation. If you have any issues, ask me. ठीक है. और ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, so you can look into them. मतलब just for your review. If you have any question, you can ask me now. Otherwise, your lecture as well as the topic of strain measurement is concluded. सर क्वेश्चन है सर. जी पूछें. सर यहाँ पे तो हमने उसके टेम्परेचर कंपेंसेशन के लिए वो डमी बीम और जो एक्चुअल बीम की मेजरमेंट, तो अगर हाँ हमारे पास एक फर्ज करें कि हमारे पास बीम और वो उस पे जो है ना स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 गेजेस लगे हुए, तो उस पे हम इस तरह वो कह सकते हैं कि इसमें जो है ना एक्सियल वो लोडिंग की वजह से नहीं होगी, मतलब कि इसमें जो स्ट्रेन होगी वो ड्यू टू टेम्परेचर होगी सर, अगर उस पे एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा हो. अच्छा चलें. सर आपका माइक ऑफ है. अच्छा
जी स्टूडेंट्स, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो अपना माइक ऑन रखें। नाम क्या है आपका स्टूडेंट? रिफतुल्लाह सर। क्या नाम, सॉरी? रिफतुल्लाह सर। अच्छा, रिफतुल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि जरा लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। एक बीम है, ठीक है, आप एक्सियल लोडिंग मेजर करना चाह रहे हैं या बेंडिंग लोडिंग मेजर करना चाह रहे हैं? कौन से में आप इंटरेस्टेड हैं? सर हम एक्सियल में एक्सियल में। सो आप जो है इसके ऊपर एक एक्सियल फोर्स अप्लाई करेंगे और आप इंटरेस्टेड हैं कि थ्रू स्ट्रेन मेजरमेंट आप ये एक्सियल फोर्स मेजर कर लें, ठीक है? यानी आप एक्सियल स्ट्रेन मेजर करेंगे, उससे फिर आप एक्सियल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? ओके, आगे क्वेश्चन पूछें। सर अगर इस पे जो है ना हमारे पास स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 लगे हुए सर, अगर इसमें जो हम कैसे सर डिफरेंशिएट हम इस तरह कर सकते हैं कि स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 अगर इस केस में लगे हुए तो उसमें जो है ना हम एक्सियल को इग्नोर करते हैं ना, एक्सियल स्ट्रेन, और उसमें जो है ना सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से वो स्ट्रेन आएगा सर। अच्छा, आप कहते हैं कि स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 अगर हम लगा लें, कहाँ पे लगा लें? टॉप सरफेस पे लगाएं, बॉटम सरफेस पे लगाएं? सर स्ट्रेन 1 और टॉप पे और स्ट्रेन 2 सर बॉटम पे। ठीक है, स्ट्रेन 1 टॉप पे हो गया और स्ट्रेन 2 जो है बॉटम पे हो गया, ठीक है। अब आगे सर इसमें हम तो वो हमने सर वो पढ़ा कि इसमें जो है ना हम इस केस में जो स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2 लगे तो इसमें हम एक्सियल को सर वो इग्नोर करते हैं ड्यू टू ऑपोजिट साइन। तो बिल्कुल इससे हम आप ये इग्नोर कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस वो सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होगा सर। नहीं, थर्मल को भी ये इग्नोर करेगा ना, क्योंकि थर्मल भी तो थर्मल बिहेवियर विल बी लाइक एक्सियल स्ट्रेन की तरह बिहेवियर होगा ना। आप अच्छा सोचे ना, अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा? आपके जो वो है क्या कहते हैं, यस हाँ, एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन होगी तो स्ट्रेन गेजेस जो है एक्सियल स्ट्रेन गेजेस को ऐसे लगेगा कि कोई एक्सियल लोड अप्लाई हुआ है इस बीम के ऊपर और उसकी वजह से एक्सियल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है। अब स्ट्रेन गेज तो इट्स काइंड ऑफ ब्लाइंड, उसे तो ये पता नहीं है कि ये जो एक्सियल change in length produce हुआ है, is it because of axial loading or is it because of temperature variation? उसे तो इस बात का नहीं पता। But अगर आपको नहीं पता या you can mistake this temperature expansion or temperature strain or this apparent strain due to temperature for actual strain due to loading। जी, आगे क्वेश्चन पूछें। सर तो हम अगर फर्ज करें और दूसरे केस में हमारे पास यही अरेंजमेंट है और हम बेंडिंग फोर्स लगा रहे हैं तो सर फिर भी वो एक्सियल स्ट्रेन सर नहीं होगा, मतलब कि टेम्परेचर की वजह से बेंडिंग तो हाँ सर होगा। हाँ हाँ, अगर आप बेंडिंग लगा लें ना, मतलब आप ऐसी फोर्स अप्लाई करें विच प्रोड्यूसेस बेंडिंग, ठीक है? अब जो है, अब इस केस में अगर आप देखें बेंडिंग होगी तो दोनों स्ट्रेन गेजेस मेयर करेंगे बेंडिंग को, ठीक है? और आपके पास एक्चुअली क्वार्टर ब्रिज के मुकाबले में डबल सेंसिटिविटी आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि अगर टेम्परेचर वेरिएशन आएगी तो वो टेम्परेचर वेरिएशन विल नॉट क्रिएट बेंडिंग, टेम्परेचर वेरिएशन विल क्रिएट एक्सियल लोडिंग, ठीक है? विल क्रिएट एक्सियल स्ट्रेन, विल रिजल्ट इन एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है? And Yes. since this configuration is completely insensitive to axial strain, therefore this configuration is temperature compensated, means that it is insensitive to any strain due to temperature variation. ओके, मतलब कि सर हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम इस अरेंजमेंट का पता हो तो हम वो कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आ रहा है या लोडिंग की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब कभी आप अपनी स्ट्रेन मेजरमेंट करते हैं ना, सो यू हैव टू, दिस इज कॉल्ड एपरेंट स्ट्रेन। एपरेंट स्ट्रेन से मुराद ये होता है कि ये स्ट्रेन आपको नजर आ रही है लेकिन एक्चुअली मौजूद नहीं है। इफ वी कंसिडर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ सम फोर्स लोडिंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, अगर हम स्ट्रेन को टिपिकली व्हेन वी आर मेजरिंग स्ट्रेन, we are, unless you are doing some thermal analysis, thermal expansion analysis, typically when we are measuring strain because of some loading, उसकी वजह से स्ट्रेन मेजर करते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई लोडिंग आएगी, इट विल क्रिएट आइदर एक्सियल स्ट्रेन और बेंडिंग स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन, ठीक है? लेकिन अगर कोई लोडिंग नहीं है और आपको स्ट्रेन नजर आ रही है, वी कॉल इट एपरेंट स्ट्रेन, ठीक है?
एपरेंट स्ट्रेन का क्या मतलब कि आपको नजर आ रही है लेकिन उसको होना नहीं चाहिए, ठीक है। और नाउ व्हाट कुड बी द फर्स्ट रीजन फॉर एपरेंट स्ट्रेन इज टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, कि टेम्परेचर वेरिएशन हो रही है, उसकी वजह से जो है आपके जो है सैंपल मटेरियल के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। इवन ये एपरेंट स्ट्रेन हम उस वक्त भी करते हैं कि जब आपकी वो है क्या कहते हैं स्ट्रेन गेज मटेरियल और जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है उन दोनों की थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट हो, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि भाई आप जो स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं ये वही स्ट्रेन है जो कि आप सोच रहे थे मेजरमेंट करने का। मींस देयर इज अ चांस कि बिकॉज ऑफ थर्मल वेरिएशन आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आए एंड यू कैन मिस्टेक इट फॉर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ लोडिंग। ओके सर। और सर अगर हम स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 4 लगाए तो उसमें जो ना हमारे पास लोडिंग की वजह से भी आएगा, अगर एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर की वजह से, तो हम इसमें हमें पता डमी चल सकता है डमी हाँ, फिर उसमें हम ये करेंगे कि उसमें हम डमी बीम यूज करेंगे, तो उसमें जो है टेम्परेचर की वजह से जो एक्सियल स्ट्रेन होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा और सिर्फ लोडिंग की वजह से जो एक्सियल स्ट्रेन होगा वो रह जाएगा। ओके सर, सही है, थैंक यू। ठीक है, चलिए सर जो जी। है हमने हर टाइम डमी बीम जो है वो यूज करना पड़ेगा सर उसके लिए उस पर्टिकुलर केस के लिए यस, हाँ उस पर्टिकुलर केस में आपने डमी बीम यूज करना है। हाँ ना सर, एक्सियल कंपेंसेशन के लिए सर वो डमी। हाँ, अगर एक्सियल लोडिंग के केस में आप टेम्परेचर कंपेंसेशन करना चाहते हैं तो आपने डमी बीम यूज करना। सही है, थैंक यू सर। और सर ठीक है, ये क्वेश्चन कि सर स्ट्रेन 1 स्ट्रेन 2 इसमें सर एपरेंट स्ट्रेन हाँ पॉसिबल हो सकता है सर, क्योंकि एक्सियल को तो निगलेक्ट करें। नहीं, इसमें टेम्परेचर की वजह से नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, सर एपरेंट स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ सर, आपने बात की ना कि जो एपरेंट स्ट्रेन टेम्परेचर की वजह से जो एपरेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं होगा जो कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। ओके सर, सही है, कि हाँ बेंडिंग लोडिंग हो और स्ट्रेन 1 जो है वो टॉप सरफेस पे हो और स्ट्रेन 2 जो है वो बॉटम सरफेस पे। ओके सर। ओके सर, ठीक, सही है, ठीक है। चलिए सही है, चलिए इंशाल्लाह फिर। जी जी पूछें। सर वो लास्ट वीक जो है ना हमारी लाइट नहीं थी सर, उसकी काइंडली वो वीडियो अपलोड कर दें ताकि ठीक उसको है, भी। चलिए सही है, मैं लेक्चर नोट्स भी अपलोड करूंगा और ये भी अपलोड करूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।